if you ever get a chance to live in Pakistan, would you or would you not? मेरे सबसे फेवरेट है डॉक्टर इसरार अहमद. It's been quite a इंडिया while. में अगर कुछ चीज़ मिस करता हूँ तो हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम जो इंडिया में होते हैं. ऐसा ही है बॉम्बे में PhD जो होता है वो दुनिया में अब तक तो नहीं होता. अभी तक नहीं हुआ, but इंशाल्लाह कराची won't disappoint you. हमारा ट्राइपॉड स्टैंड अलोन is costing $25,000. Ooh, tripod stand. Only camera stand, 25, the best in the world. अभी तक आपने कितने लोगों को मुसलमान किया? इंडिया में जब तादाद होती है हमारी 5 लाख 10 लाख उससे ज़्यादा होती है. Once I saw a debate of yours with Dr. Shishi Naik. It was very entertaining as well. I mean, the most famous person I've debated is Shishi Ravi. Do you think your son, I've met him, a very nice gentleman, do you think he can become the next Dr. Zakir? पाकिस्तान में मिनिमम 20 लाख तो होना चाहिए ना, तो ऐसा ही है. पाकिस्तान में बहुत आने वाले हैं आपके. The largest gathering I've addressed is in Kishanganj in 2012. Where there were more than 1 million people. 10 लाख से ज़्यादा. More than 1 million people. Live in one sitting. मलेशिया क्यों ही चूज किया आपने? Yes, Malaysia, because as I told you, Malaysia, according to me, is the best available Muslim country for a Muslim to settle in. Control something, yeah. If you could change something, what would that be? I would make the full world Muslims. Assalamualaikum guys, welcome back to another episode of the Tzpodcast. मैं ज़ैद खान टेसोरी आपका होस्ट, आपका दोस्त को शामिल करता हूँ आपको एक और पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के अंदर. आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं. मैं समझता हूँ आई एम वेरी ऑनर्ड एंड वेरी ग्लैड टू बी विद हिम. मैं समझता हूँ कि मेरे पॉडकास्ट जितनी मैंने पॉडकास्ट किए हैं, इफ़ आई टू लिस्ट देम ऑल, वो लिस्ट के टॉप पे होंगे. किसी तारीफ के मोहताज नहीं है जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. सर डॉक्टर साहब, यू कम टू पाकिस्तान. आपने अभी इस्लामाबाद भी विजिट किया माशाल्लाह से, बट दे से कराची इज़ द हार्ट ऑफ पाकिस्तान. कैसी ट्रिप जा रही है आपकी? हाउस कराची की बिरयानी भी बहुत मशहूर है. हैव यू ट्राइड इट? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन. माशाल्लाह ये सेकंड टाइम मैं कराची आ रहा हूँ. सेकंड टाइम आने? ओह, फर्स्ट टाइम आया था 33 इयर्स पहले, तो उस वक्त कैसे एक्सपीरियंस रहा? 1991. वो तो मेरी पर्सनल विजिट थी. दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स ऑन अ लेक्चर टूर. ऑफ कोर्स फ़र्क तो है, लेकिन ज़्यादा कराची देखा नहीं अब तक में. हार्डली कल ही आया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक हफ्ते में मैं कराची शेयर करूँ. जानते कि बिरयानी तो अच्छी थी माशाल्लाह आपकी. ट्राई की आपने? जी हाँ, इस्लामाबाद आपके घर पे ही खाए मैं. जी जी, अभी आपने हमारे साथ ही खाई थी. इस्लामाबाद में विजिट कैसा रहा? किन किन लोगों से मुलाकात हुई? मौलाना फजल रहमान से आपकी मुलाकात हुई थी. सो आपने एक अच्छा कमेंट भी उनके लिए शेयर किया था. सो हैव यू बीन फॉलोइंग हिम सिंस लॉन्ग टाइम? जी हाँ, जितने भी बड़े उलमा हैं पाकिस्तान के, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग से मुलाकात हुई थी बाहर, चाहे मलेशिया में हो या चाहे दुबई में हो चाहे कतर में हो. हाँ, लेकिन दो मशहूर उलमा से जो फेस टू फेस जब बात नहीं हुई, वो एक मौलाना फजल रहमान है और मुफ्ती अब्दुल रशीद. ये दोनों से पहले की मुलाकात हुई नहीं थी. फ़ोन पे बात हुई थी, तारुफ तो था. और बाकी जो मुफ्ती आज़ाद थे, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील, मुफ्ती तारिक मसूद. आपका पर्सनल फेवरेट कोई है? मेरे सबसे फेवरेट है डॉक्टर इसरार अहमद. डॉक्टर साहब सही है. वो सबसे पहले जो उर्दू के मौलाना थे जिनकी तकरीर सुनता था मैं, पहले जो 1988 से सुनने शुरू की. पाकिस्तान में या कराची में इज देयर एनीथिंग यू वांट टू विजिट बट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी या कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से यू वांट एबल टू विजिट? कोई ऐसी चीज़? वी वुड लाइक टू डू अ टॉक बिगर देन इंडिया. इंडिया में जब तादाद होती है हमारी 5 लाख 10 लाख उससे ज़्यादा होती है. अच्छा माशाल्लाह. तो पाकिस्तान में मिनिमम 20 लाख तो होना चाहिए ना, तो ऐसा ही है. पाकिस्तान में बहुत आने वाले हैं आपके. नहीं, तो वो ख्वाहिश जो मेरी थी कि 20 या 30 लाख हो, तो इंशाल्लाह मे बी ये ट्रिप इंशाल्लाह. अगर कोई के सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस भी हमें काफ़ी चाहिए, हमें देखनी पड़ती है, मद्देनजर करनी पड़ती हैं. अ डिफरेंस यू सॉ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, बिकॉज लोग कल्चर्स क्वाइट सिमिलर. सो डिफरेंस यू सॉ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कि आपने इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा. पाकिस्तान, कराची somewhat like Bombay. Bombay is also the commercial capital of India, and Pakistan is the commercial capital of Karachi is the commercial capital of Pakistan. तो इस मुकाबले में of course the population of Bombay is much bigger. Right. Bombay is more than 26 million. ऐसा ही. And Karachi के population 17.649 million है. तो वो मुकाबले में of course Bombay is more crowded.
कराची में आप देखेंगे द प्रेजेंस ऑफ पुलिस इन मेनी प्लेसेस जो मुंबई में नहीं है. नहीं है. इतना not yes, sometimes you'll have But checkposts. Bombay has changed in some while. Of course, Bombay has developed the population and the structures and everything. Even Karachi has developed. So the major difference is, of course, that the presence of police Right. and the security issue is there. But public के अंदर, आवाम के अंदर, any difference? For me, alhamdulillah, for me, I've got no issues. Allah का फजल है. तो अभी आपको कराची की ऑडियंस कैसी लगी? सवाल, they are all enthusiastic. कोई ऐसा सवाल जो you really liked आज की महफिल के अंदर? आज की महफिल में अच्छा पार्ट था कि माशाल्लाह जितने सवाल सब गैर मुस्लिम के थे. अच्छा. So there were non-Muslims in the audience. So I like जो सवाल Questions from गैर मुस्लिम. बिल्कुल ठीक है. वो मुसलमान के वही सवाल रहते. ये अलाउड है क्या नहीं, वो अलाउड नहीं, वुज़ू कैसा करने का, नमाज. तो वो तो it's a different feel altogether. So my field is mainly answering to non-Muslim जो गैर मुसलमान होते. ऐसा ही कुछ उनके questions there more. जी. इंडिया जाने का दिल करता है कभी कभार? It's been quite a इंडिया while. में अगर कुछ चीज़ मिस करता हूँ तो हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम जो इंडिया में होते हैं. ऐसा ही है. बॉम्बे में जो होता है वो दुनिया में अब तक तो नहीं होता. अभी तक नहीं हुआ. But इंशाल्लाह कराची won't disappoint you. और बॉम्बे में जो टेक्नोलॉजी है इन टर्म्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज वेरी इजी टू गेट द बेस्ट ऑफ तो हमारे पास खुद के कैमरा 18 होते थे और हमको हायर करने की तो आसानी से मिल जाते हैं जो दूसरे ममालिक में नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो बहुत महंगे. अगर आप जाएंगे यूएसए तो बॉम्बे बिकॉज इट्स द हब, इट्स द बॉलीवुड, सो वहाँ ऑल दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी इजी. सो वी गेट द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट, बेस्ट ऑफ कैमरा, बेस्ट ऑफ टेक्निकल पीपल एट अ वेरी चीप रेट. ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आपको बहुत पसंद है बट यू आरंट एबल टू पुट योर हैंड्स ऑन इट, या चाहते हैं यार कहीं से मिल जाए, कहीं पर भी जाना हो इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री आई शुड गो, या एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट आई रियली वांट दोस कैमरास, एनी पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी? अल्लाह का फजल है कि जहाँ तक के टेक्नोलॉजी ऑफ रिकॉर्डिंग है वी हैव द बेस्ट इन द वर्ल्ड. जो कैमरा हमारे पास है, जैसे मैंने कहा कि ऑन्जिन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड. हमारा ट्राइपॉड स्टैंड अलोन is costing $25,000. Ooh, tripod stand. Only camera stand, 25. The best in the world. $25,000 and आप रुपीस में कन्वर्ट करें तो कितना? मुझे तो डर लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कितना इक्विपमेंट जरा साइड पे कर दूँ. मैं तो बड़ा तो वो लोग बोलेंगे बेवकूफ आदमी सिर्फ स्टैंड के लिए $25,000 कितने? हमारे तो ये पाकिस्तानी 10,000 रुपए का, $25,000 कितने रुपए होते हैं? 7 लाख पाकिस्तानी. $25,000 ये कोई आपके 50 lakhs हर स्टैंड 55 lakhs 55 lakhs 70 lakhs कोई 280 70 lakhs ऐसा ही है. तो कोई बोलेंगे पागल है, 70 lakhs में तो पूरा मेरे 3-4 कैमरा भी स्टैंड आ जाएंगे. 70 lakhs में तो हमारा एक रूम आ जाएगा. जिसे कहते हैं ना, हाँ, क्या जोरी को पता हिरी की कदर, या गधे को क्या पता जाफरान की कदर. ऐसा ही है. तो लोग देखेंगे बोलेंगे सिर्फ स्टैंड के लिए या कैमरा उतारने आता है. तो लेकिन जो स्टैंड से आप शूटिंग करेंगे ऐसे कैमराज रहेंगे तो जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी तो ये आपकी रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट इस क्वालिटी पे नहीं हो सकता. आई डोंट थिंक सो. तो ब्रॉडकास्ट अभी 4K शुरू हो गया बट मोस्ट ऑफ द चैनल्स आर इन HD. तो हम रिकॉर्ड करते 8.6K पे और उसको डाउनग्रेड करते टू HD. बट ये ओरिजिनल जो 8.6K दैट विल बी फॉर नेक्स्ट मे बी 100 years. इसलिए आप देखेंगे फिल्म जो रिकॉर्ड कर चुके 50 years बैक आज स्क्रीन पे डालो क्लियर है. तो ये रिकॉर्डिंग आप खाली टीवी पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख नहीं सकते. हमारे रिकॉर्डिंग आप ब्लॉक करो पूरी बिल्डिंग पे भी तो इट विल बी वेरी क्लियर उसकी क्वालिटी है. एंड द वन थिंग अभी फॉर एग्जांपल आप अभी इसका सिम कार्ड देखो कुछ नहीं, इसके तो कुछ मे बी 128 GB होगा. हमारे एक कार्ड 2 TB के रहते, तो एक रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा 40 TB होता है. 40 TB. हमारी जो रिकॉर्डिंग हुई थी दावत एनी प्रोग्राम की 2016 में, तो 14 कैमरास हुई थी 8K and 4K. उसका 3 petabyte. मुझे डर लग रहा है. लोग बात करते हैं MB GB, हम लोग petabyte की बात मैं तो कह रहा हूँ ये कैमरा जरा साइड कर दें. You were just telling me कि आपने कैमरामैन का भी एक बार जॉब की है. So how was the experience then? कैमरा का जॉब नहीं किया, नो हाउ टू हैंडल द कैमरा. अच्छा, you know how to handle the camera. कैमरा तो Professionally. ऑफ कोर्स जितने इक्विपमेंट खरीदते हो पहले सीखता हूँ मैं खुद सीखता हूँ फिर बाकी को सिखाता हूँ. पर ये तो कैमरास I've seen कि लोग जैकेट्स पे भी लगा के घूमते हैं and then it's very hard to handle them. No, that's different depending upon what you do. The camera can put on a jibby jib. It can wear a jacket and can also use it. If you were given a choice of superpowers, like if you could do anything, what would that be? Like, for example, if you could control something, yeah, if you could change something, what would that be?
or make the full world Muslims. Full world Muslims. Alhamdulillah. MashaAllah, that's a very deep. If you could go in the past, if you could change something, what would that be? Maybe I'll strive harder for dawah. Sorry? I would strive harder for dawah. MashaAllah. You have done many debates. What's the most competitive one, and with who? The most competitive and the intellectual one was the one I debated in USA with Dr. William Campbell. With? Dr. William Campbell. The topic was Bible and Quran in the light of science. Once I saw a debate of yours with Dr. Shishi Ravi Shankar. It was very entertaining as well. I mean, the most famous person I've debated is Shishi Ravi Shankar. But it was very entertaining as well watching his reactions. Yes. अभी तक आपने सबसे बड़ी महफिल कौन सी अटेंड की है with the most amount of people? The largest gathering I've addressed is in Kishanganj in 2012, where there were more than 1 million people. That's More than 1 million people live in one sitting. live. In one sitting. What's the most amount of people you have answered? Like Answered? questions जिनके आपने answer किए हो? Talking about quantity or talking about the length? Quantity. I mean, how many questions? एक महफिल के अंदर. Depends. It depends more on the length than the. अभी तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं कभी कभी 30 कर लेते हमारे जो आज डॉक्टर जाकिर एवरी सेकंड वीक होते 30 40 depends on Questions. depends what type of question. If the questions are short we can answer up to 40. If it's long then even for 2 hours it hardly we can answer only about 7. It depends upon the length of the answers. ऐसा कोई question someone asked you या you had in mind but you weren't able to answer yourself या किसी ने पूछा you weren't able to answer them, what would that be? This one. This one? This is a very hard question. I'm not sure if you'll be able to answer, but you can give us a round figure. अभी तक आपने कितने लोगों को मुसलमान किया है? Allah is keeping the hisab. या आपको आइडिया नहीं है? But would it be in thousands? लाखों में होगा? Our beloved Prophet said even if you make one person come to Islam, it's better than the red camel. Better than red Allah camel. gives it, we just do a job of Red camels are the most expensive and the most Yes, like how today you say Rolls Royce, so Arabs used to say the red camel. red camels. Are they extinct now? I don't think so. Yes. They're around. They're there. Do you think your son, I've met him, a very nice gentleman, do you think he can become the next Dr. Zakir? Inshallah, become better. Better. And how is that going? अभी आप उनको See, there is तालीम one के- thing is that what is the training, and the second thing is Allah's help. As far as training and opportunity is concerned, at his age, what training he got is maybe 1,000,000 times better than me. million times better than you got. According to me, because I started dawah at the age of 27, 28. Me, mashallah, started at a young age. But we are down to the 6, 7. last two questions. What's the most unexpected fan moment? या ऐसा कोई fan moment या तुम बोला यार ये क्या हुआ ये तो बड़ा समझ नहीं आया. What would that be? Like it all of a sudden it happened. Unexpected things. Yes, I remember when we had the second conference in 2008, and we realized that the permission of our conference was taken back because some Muslims objected. Oh, So the okay. conference permission was taken. We had done a very big conference. So the best is to ask for Allah's help. We prayed to Allah, and mashallah, the Home Minister's son was a Hindu. He came to Bombay, he touched my feet, he said, I'm your fan. I said, bowing is not correct. And Allah solved it. So it's Allah who solves all the problems. Last question. If you ever get a chance to live in Pakistan, would you or would you not? अगर आपको कभी चांस मिले पाकिस्तान में रिहाइश करने का अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होने का, आई थिंक अभी इस्लामाबाद वाले बुरा मानेंगे बट कराची के अंदर, would you ever? See, it depends upon the situation. लाहौर वाले भी बड़ा गुस्सा हो जाएंगे. Where I get the opportunity to let my deen, I would like to go there. Like if you ask me, number one, I'd prefer India. Because that is the battlefield. It's the battlefield. The Mujahid likes the battlefield. But of course, we never thought that there would be an allegation laid against me I'm promoting terrorism. I used to go and give talks against terrorism. So everything depends upon situation. Now, of course, for me, Malaysia is the best because the way I look at it, it's the best of the available countries for a Muslim to settle in. As far as Pakistan is concerned, of course, I would love to give lectures here. I would love to. But regarding settling full time, we feel where we get more opportunities for dawah, that would be the best. Of course, the time will change depending on what project you're involved in. So at present, of course, we are involved in various projects of doing dawah. So now, as per now, I would say that as per the situation, if given the choice,
we had opportunity of more than 15 countries asking me to settle there. Ooh. The But you heads of chose state. Malaysia, and why is that? Malaysia क्यों ही choose किया आपने? Yes, Malaysia, because as I told you, Malaysia, according to me, is the best available Muslim country for a Muslim to settle in. There are various reasons. Not Indonesia? Not? Indonesia? No, not at all. Malaysia is better? And multiple times, according to me. And number one is that there are very few Muslim countries which are not controlled by an external power or a non-Muslim power. Almost all the Muslim countries are controlled by some Western force or a non-Muslim country. ऐसा ही है. Malaysia is one of the few countries. Which is not. Number two, it is away from the war zone. You know the Middle East is a war zone. So Malaysia is away from that. Number three, it's because of its geographical location, being in the southeast part. ऐसा ही है. The chances of non-Muslims interfering is less. Number four, Islam is the federal religion of Malaysia. Number five, Malaysia is an advanced country. It's economically strong. In terms of living, the expenditure, the expenses of Malaysia is quite less. Besides that... Living of cost is less. Sorry? Living of cost is less. Cost of living. Number seven, Islam is the vote bank. There are very few countries in the world where Islam is the vote bank. In Pakistan, Islam is not the vote bank. ऐसा ही है. It's not the vote bank. There are few countries where Islam is the vote bank. Number nine, not counting the Arab world, the Malaysians, I feel, are one of the best practicing Muslims, not counting Arabs. Okay. I believe an average... Malaysians are after Arabs, not counting Arabs. ठीक है. Because Arabs are different in Tawheed, and so if you don't count them, Malaysia will be the best, one of the best practicing Muslims among the non-Arab countries. Okay. Better than average Indian Muslim, better than average Pakistani Muslim in terms of Salah, in terms of knowing the Deen, in terms of knowing Zakat and performing Hajj. And the Malaysia, in terms of scenery, is very beautiful. And the next point, maybe the 11th point, is that, when you give Zakat, that Zakat can be offset for your income tax. So if you have to give income tax for an amount, if you give Zakat to the registered Baitul Mal, so that is exempted. But why did India do this to you? Matlab, why did they put these charges? Is like a personal grudge with anybody? No, because I was a Dahi, and most of the non-Muslims loved me, and they could see that many of the non-Muslims were accepting the Deen. So it was against the vote bank. It was against the vote bank. Is there anyone after you in India? Matlab, do you think आपके बाद अगर if there's someone in India, is there anyone after you who's doing the same dawa? So there are people doing in different ways. There are dawa being done, but as far as giving intellectual answers or giving replies to atheism or Quran-bound science, there is a vacuum. The youth, हमारे जो audience है वो काफी ज़्यादा youth है. कोई ऐसा last message to the youth you would like to give? Camera में देखो please. For the youth and all the Muslim Ummah, my advice would be that you read the Quran with understanding. You read it in the language you understand the best. Besides the Arabic, read the translation. If you know Urdu, read in Urdu. If you know Punjabi, read in Punjabi. If you know English, read in English. And implement on the message. Because Quran is the most positive book in the world. It's a future world constitution. It's a proclamation to humanity. It is a fountain of mercy and wisdom. It's a fountain of mercy and wisdom. It's a warning to the heedless. It's a guide to the erring. It's an assurance to those in doubt. It's a solace to the suffering and a hope to those in despair. So if you read the Quran with understanding and implement on it, inshallah you'll be successful in this world as well as the akhirah. Guys, you heard the man himself. Very intellectual talk. आज की हमारी talk जो थी थोड़ी lighter hand पे थी. हमने सारी चीज़ discuss भी की, उनकी habits भी discuss की साथ ही साथ. उनको cameras का भी बहुत शौक है. We were very honored to be with him. डॉक्टर साहब आप हमें इजाज़त दें. आज का podcast हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं. Zaid Khan signing out.